এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আহিছে প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে আৰু এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত আমি পুনচাতে সেই মন্তব্য শুনাই ল'ব চেষ্টা কৰিছো নিউজ দৰ্শকক by the Shiv Sena against 16 MLAs under para 21A of the 10th schedule. Para 21A says if a person voluntarily gives up membership of the party, he is liable for disqualification. There are several judgments. Ravi Nayak, then latest judgment of Karnataka, where the Supreme Court has said that a legislator's action outside the house, inside the house की बात नहीं है, outside the house, if he commits anti-party activity, he is liable to be disqualified. And in fact, the most important judgment of the Speaker is the judgment of or the order of the Vice President of India in Sharad Yadavji's case, where I was appearing for Sharad Yadavji and we lost. And the only activity which was attributed to Sharad Yadavji is that he went and attended a rally of Lalu Prasad ji against Nitish Kumar. That was the only thing. Now, as far as the facts of this case are concerned, there were several meetings which were called by the Shiv Sena at a crucial time. None of these meetings have been responded to, were attended to, number one. Number two, the action of going to a foreign state, I say other than Maharashtra, BJP ruled states, meeting with BJP leaders there, trying to topple the government, writing letters against the government, amounts to a clear violation of para 21A. So ये है हमारा प्ली स्पीकर साहब के सामने. दूसरी बात यह है कि बहुत सारी मीडिया में ये चर्चा आ रही है कि हम लोगों के पास 2/3 है एंड देयरफॉर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लगता है. ये यू कैन आस्क एनी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर दैट दिस इज टोटली रॉन्ग. The concept of 2/3 applies only if there is a merger. ये सिर्फ बोलने से कि हम लोग के पास 2/3 मेजॉरिटी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है डिस्क्वालिफिकेशन पे. जब तक आप अपनी जो MLAs है कोई और पार्टी में मर्ज नहीं कर सकते, that till that time disqualification applies. Now in this case, till today as we speak, there is no merger. They have already committed the act of voluntarily giving up. Disqualification petitions have already been filed and आज तक कोई merger नहीं है. ये जो merger का concept आया 2003 में, इसके पहले जो था split का provision था constitution में कि आप 1/3 लेके faction बना सकते हैं. तो इनको जो भी legal advice दे रहे हैं उनको सोचना पड़ेगा कि ये क्या डिलीटेड अमेंडमेंट पे ये पूरा कार्रवाई हो रहा है या जो अभी जो मौजूदा सिचुएशन है कि जब तक मर्जर ना हो ये डिस्क्वालिफिकेशन से बच नहीं सकते. सो दैट इज पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 3, यस, पॉइंट नंबर 3, दे आर सेइंग दैट द डेप्यूटी स्पीकर हैज नो jurisdiction. नाउ दिस इज ऑल्सो टोटली रॉन्ग. नाउ इन द एब्सेंस ऑफ अ स्पीकर, the deputy speaker has all the powers under the constitution to adjudicate under the 10th schedule. They filed apparently some no confidence against the deputy speaker. तो वो जो हम लोगों को भी पता नहीं है कि we don't have access to that communication, but जो आपके माध्यम से हम लोगों को पता चला है कि the deputy speaker has rejected that, saying that some अनऑथोराइज्ड पर्सन कोई कुरियर से इनको लेके आया कोई कम्युनिकेशन कि ये आपको आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस हम लोग लेके आ रहे हैं. तो डेप्यूटी स्पीकर साहब ने ये बोला हुआ है कि जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होता हूं कि ये जेन्युइन है, ऑथेंटिक है, मैं इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करता हूं. एंड दैट हैज बीन रिजेक्टेड. एंड मोर इम्पोर्टेंटली इन लॉ, लेट मी टेल यू दैट टिल द असेंबली इज कन्वीन्ड, there cannot be a notice of motion. Ye all the constitutional experts will agree. So therefore, in tomorrow they have been called and they will have to submit their replies, and the honorable deputy speaker
will take the action in accordance with law and as per the situation, and we are going to urge that all these 16 MLAs will be disqualified, have to be disqualified in accordance with the provisions of 10th schedule, and they will have to face the electorate. That's all I have to say. Thank you. मराठी Marathi to